द टर्म म्यूटेशन वॉज कॉइन्ड बाय। सो जो म्यूटेशन टर्म था किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? ऑप्शन ए पास्टर, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन सी ह्यूगो द वेरिस, ऑप्शन डी लमार्क। So the correct answer is Hugo de Veres. So the term mutation was introduced by Hugo de Veres. Actually, when he was working in his garden, तो उन्होंने क्या देखा था कि उनके गार्डन में एक इवनिंग प्रिमरोज था. इट्स अ टाइप ऑफ फ्लावर. उसमें उन्होंने एक एबरेंट या एक असामान्य टाइप का चेंज देखा था उसके F1 जनरेशन में, दैट इज ऑफ टू प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज. ओके, सो ये उन्हें चेंज, वो एक सर्टेन अपीयरेंस, उन्हें एक न्यू कैरेक्टर को जनरेट किया. ओके, तो इस न्यू कैरेक्टर चेंज में चेंज उन्होंने डिफाइन किया एज अ टर्म म्यूटेशन. सो उन्होंने एज म्यूटेशन को कैसे डिफाइन किया था? अ सर्टेन डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. ओके, एक सर्टेन इनहेरिटेबल चेंज था. ओके, वो एक डिसकंटिन्यूअस चेंज था. So this was termed by Hugo de Veres. So option C is correct. Next. Number 2. Compound microscope was discovered by option A Anthony Van, option B Pasteur, option C Johnson and Hans, option D Koch. Okay. So compound microscope किसने इसकी डिस्कवरी की थी? Okay. So the correct option is Hansen and Johnson. Okay, so ये क्या थे? एक डच साइंटिस्ट से. They were actually father and sons. Okay, तो इन्होंने at late 16th century ये डिस्कवर किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने क्या किया था? एक ट्यूब के टॉप और एक बॉटम में उन्होंने लेंस रखी और उसके अंडर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा और उन्होंने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट एक मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाई दे रहा है. सो थ्रू दिस दे डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. फिर लेटर क्या किया हुआ कि एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने इसे और इम्प्रूव किया लेटर सेंचुरीज में. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज जॉनसन एंड हैंसन. Question number 3, father of medical microbiology. So this is an important question. You should remember who is known as the father of medical microbiology. So the correct option is Koch, Robert Koch. Okay, Robert Koch को हम लोग father of modern medical microbiology के नाम से भी जानते हैं. Okay, next. Question number 4. Disease that affect many people at different countries is termed as option A sporadic, option B pandemic, option C epidemic, option D endemic. So this is a good question. Okay, so disease that affect many people at different countries. So हम एक एक करके देखते हैं. So first, what is endemic? Endemic क्या होता है? Endemic वो मतलब डिजीज दैट हैज ऑकर्ड ऑन अ रेगुलर ऑन अ सर्टेन एरिया. एक सर्टेन रीजन में वो डिजीज ऑकर होती है, तो उस रीजन उस रीजन्स को हम लोग टर्म करते हैं एज एन एंडेमिक. और जब ये एंडेमिक नंबर ऑफ केसेस ये डिजीजेस के इंक्रीज करते हैं एंडेमिक लेवल से, तो इस राइज अप होते हैं एक्चुअली, तो इसे हम लोग टर्म करते हैं एज एपिडेमिक. ओके, और अब ये एपिडेमिक व्हेन डिफरेंट कंट्रीज में सर्कुलेट कर जाते हैं तो इसे हम टर्म करते हैं एज पैंडेमिक. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पैंडेमिक, डिजीज दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज. ओके, एंड नेक्स्ट, व्हाट इज स्पोरेडिक? स्पोरेडिक होता है विच ऑकर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स. ओके, कभी ज्यादा बढ़ गया, कभी कम हो गया, so at irregular intervals. So our correct answer will be pandemic. Next, question number 5. Prophylaxis of cholera is. Actually prophylaxis meaning क्या होता है? First let's see the option. Option A protected water supply, option B environmental sanitation, option C immunization with killed vaccines, all of the above.
ओके, सो प्रोफाइलैक्सिस मींस क्या होता है, एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज। तो कॉलेरा मेनली एक बैक्टीरियल डिजीज है जो स्प्रेड होता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर्स एंड फूड से। सो सो प्रिवेंशन क्या होगा, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, in electron microscope what happened, what material is termed as objective lens? Okay, in electron microscope what material is used as an objective lens? Option A, magnetic coils. Option B, superfine glass. Option C, aluminium foils. Option D, electrons. So in electron microscope magnetic coils होती है, उस मैग्नेटिक कॉइल्स के दे आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब ऑब्जेक्टिव लेंस दे कंसिस्ट ऑफ पोल पीस टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, और एक योक होता है टू क्रिएट अ मैग्नेटिक पाथ। ओके, और कॉपर वायर क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, सो ये दे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट होता है। So these electron beams cannot be focused on a normal glass. So इसे मैग्नेटिक कॉइल्स और इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स की जरूरत होगी। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नेटिक कॉइल्स। नेक्स्ट, द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑप्शन ए, absence of locomotion. Option B, absence of nuclear envelope. Option C, absence of nuclear material. Option D, absence of protein synthesis. So main feature prokaryotic organism का क्या है? अब जैसे prokaryotic organism, so they are single celled organisms. They belong to bacteria and archaebacteria groups. Okay, so they are smaller than eukaryotics, they have no nucleus, and they lack organelles. Okay, now all prokaryotic cells are enclosed in a cell wall, so they do not so if they do not have a proper organelles, so they will not have the nuclear envelopes. Okay, so option B, there will be the absence of nuclear envelope. They will have a single loop of DNA in the cytoplasm and an additional उनके पास एक सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए होगा। उस सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड्स विच इज यूजुअली यूज्ड टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू another. Okay, so lack of nuclear envelope. Since they have plasmid, so plasmid से वहां पे genetic material transfer होता है। Next, question number 8. The stacked particles on the cristae of mitochondria are called. सो माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो सब कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक्चुअली माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल या करंट करेंसी ऑफ द सेल। ओके, तो ये क्या होते हैं, सब कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके इनर मेम्ब्रेन में ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट आर एसेंशियल फॉर वेरियस फंक्शंस। ओके, सो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, दे जनरेट द एटीपी and the energy. So this provide a large amount and surface for chemical reactions. Okay, और ये ATP generate करता है, synthesis, and इसमें cytochromes भी synthesis होते हैं. So the stacked particles on cristae of mitochondria are called peryxomes. इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिजोम्स। जो stacked particles होते हैं उसे हम लोग पेरिजोम्स के नाम से जानते हैं। सो ग्लाइकोसोम्स जो होते हैं एक्चुअली ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के
पेरिक्सोम्स होते हैं जो मेनली प्लांट्स में या फिलामेंटस फंजाइज में प्रेजेंट होते हैं, और इनके सीड्स में मेनली फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होता है। ओके, एंड ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं, इन लोग इनर इनर मेम्ब्रेन सरफेस में प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे के। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी जो स्टैक्ड पार्टिकल्स है वो पेरिक्सोम्स होते हैं। पेरिक्सोम्स के जो में अद क्या बोलते हैं उसके स्पेशलाइज्ड पेरिक्सोम्स को हम लोग ग्लाइऑक्सीजोम्स बोलते हैं, और इस ग्लाइऑक्सीजोम्स जो मेनली प्लांट्स एंड फिलामेंटस फंजाइज में प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन सरफेस में पाए जाते हैं क्रिस्टे के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक मेथड्स were first introduced by option A Lord Lister, option B Ivanovsky, option D Bejernik, option D Edward Jenner। ओके, सो ये एंटीसेप्टिक मेथड हमने क्लास 1 में भी देखा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, सो इट्स लॉर्ड लिस्टर। ओके, जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है सो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप पहले क्लास 1 देखिए, सो उधर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर भी होंगे। सो नेक्स्ट, इवानोस्की क्या होते हैं, ड्रिम्टी इवानोस्की, ही इज द co-founder of virus, okay, and one of the founder of virology, जो टोबैक मोज़ाइक डिजीज के लिए जाने गए थे। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ही डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। बेजरिंग क्या है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। सो ये छोटी छोटी बातें आप नोट डाउन करके रखिए एंड डेली प्रैक्टिस कीजिए। So correct option is option number 9, Lord Lister. Next, Kuru disease in human is caused by option A bacteria, option B viroids, option C prions, option D mycoplasma। So जो what is Kuru disease now? Kuru disease, it's caused by prions. Okay, so my first correct answer is prions। ये क्या होता है, ये एक ब्रेन डिजीज है। ओके, ये ब्रेन टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है एक पर्सन के। सो जो एक इन्फेक्टिव एजेंट्स होता है ये पास होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन व्हेन वन पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विथ दैट इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, और ये कुरू डिजीज क्या है, ये मेनली रेयर होता है और ये इनक्यूरेबल होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल एक डिजेनरेटिव है, न्यूरो डिजेनरेटिव एक डिजीज है। सो इट्स अ ब्रेन डिजीज विच इनक्यूरेबल। Question number 11, a mutation that produces termination codon is, okay, termination codon, that is nonsense mutation। Option number C, so option A क्या है, missense mutation, option B neutral mutation, option C nonsense mutation, option D reverse mutation। So mutation क्या है, a codon specifying one amino acid change to terminate codon, जो terminate करने के लिए help करता है, that is nonsense mutation। And missense mutation क्या होता है, is a single nucleotide chain leads to codon that codes for different amino acids। Okay, so understand the difference in these two. These two are too confusing. This is for different amino acids. Okay, next. During conjugation, the genetic material will be transferred through option A cell wall, option B medium, option C pili, option D capsule। So during conjugation, so our correct answer will be pili। Okay, now let's see why। So during conjugation क्या होता है, one bacterium serves as a donor of the genetic material and the donor serves as the recipient।
तो एक क्या होता है, एक डोनर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। अब जो डोनर होता है, it carries a DNA sequence that is the F factor, that is fertility factor. Now अब ये F factor allow करता है donor to produce a thin tube like structure, and this thin tube like structure is pili. Okay, that is a single is known as pilus. So donor produces a thin tube like structure, that is a pilus, which the recipient comes in, when the recipient comes in contact with it, donor conjugate with it, and the transfer of genetic material occurs. Okay, so the medium is pili. Option number C is correct. Okay, next. Antiseptic surgery was discovered by, हमने आगे ही देखा, ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी अर्नेस्ट एबे, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी बेजरिंग. सो एंटीसेप्टिक सर्जरी, हम इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, एंड दैट इज जोसेफ लिस्टर. ओके, अर्नस्ट एबे क्या थे, इन्होंने एक न्यूमेरिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर किया था. उन्होंने रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इवन उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप का, एंड दैट फॉर्मूला वाज नोन एज एबेज इक्वेशन, और दैट इज d is equals to wavelength by 2 into its numerical aperture. Okay, next Louis Pasteur, we know that he is known as the father of microbiology. उन्होंने various discoveries की अपने लाइफ स्पैन में, जैसे वैक्सीनेशन, पास्चराइजेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. ओके, and Bejering that he is the co-founder of virology, environmental microbiology. He is rather known as father of soil microbiology. Okay, so option A हमारा सही होगा. Next, question number 14. Tuberculosis is a waterborne disease, airborne disease, foodborne disease, arthropod-borne disease. So tuberculosis is an airborne disease. Okay, so tuberculosis, that is TB, it is an infectious disease that most often affects the lungs, and it is caused by bacteria. Okay, और ये spread कैसे करती है? Through air. It can be through coughing, sneezing, or splits, water droplets के through. And tuberculosis, it can be, it's preventable, curable if ये diagnosis कर लिए जाए early stage में. Okay. Question number 15. Phagocytic phenomena was discovered by option A Louis Pasteur, option D Alexander Fleming, option D C Metchnikoff, sorry, and option D Robert Koch. Okay, so what is phagocytic phenomena and who discovered it? So Louis Pasteur, again and again same question. Louis Pasteur, he is known as father of modern microbiology. He discovered vaccinations, pasteurizations, microbial fermentations, and other. फिर Alexander Fleming, he was a Scottish bacteriologist, okay, and he is better known for the discovery of penicillium. Metchnikoff, so wait, so this is my correct answer also, that he discovered the phagocytic phenomenon. Okay, and Robert Koch, he is the founder of bacteriology, and he discovered the anthrax. Even Robert Koch के कुछ Koch postulates भी हैं. So go and so you should remember all these postulates. It's an important. Next question, number 16. Mesosomes are also known as option A mitochondria, option B endoplasmic reticulum, option C plasmids, option D chondroids. So mesosomes क्या होते हैं actually? Mesosomes are also known as chondroids. Okay, they are intracellular compartments, that is organelles,
which are present in bacteria, okay, and it is absent in eukaryotes. So next question, next 17. Hybridoma technique was first discovered by option A Kohler and Milstein, option B Robert Koch, option C D Herle, option D Landsteiner. Okay, so hybridoma technique first किसने discover की थी? So this technique was first discovered by Kohler and Milstein. Okay, so Kohler Milstein ने ये टेक्निक को डिस्कवर की थी, that is hybridoma टेक्नोलॉजी को, and this was discovered for the production of monoclonal antibodies, and it is most widely used technology in modern researches and studies. Next, Robert Koch. Robert Koch we just discussed in back in few slides. Even के बहुत सारे कोच के postulates हैं. Next, D Herele. D Herele क्या है? He was the co-discoverer of bacteriophages, viruses that infects bacteria. Even इन्होंने experiments किए बहुत सारे, which shows the possibility of phase therapy. Okay, and Landsteiner, he was distinguished for the means he distinguished the main blood groups. Next, number 18. The minimum number of bacteria required to produce clinical evidence of death in a susceptible animal under standard condition is called. So minimal number of bacteria that is required to produce clinical evidences of death, okay, in a susceptible animal under standard condition. Okay, option A क्या है? Option A is LD50, option B ID, option C MLD, option D AD. Okay, so the correct answer is MLD. So MLD is minimum lethal dose. Okay, minimum lethal dose is the number of bacteria that causes disease in animal under standard conditions. And this LD50 या ID50 क्या होता है? Is the dose which is required to infect 50%, infect or kill 50% of the animal tested under the standard conditions. So my correct answer will be MLD, that is minimum lethal dose. Next, number 19. In electron microscope, source of electrons is from option A mercury, option B tungsten metal, option C both A and B, option D none of the above. Okay, so in electron microscope, source of electrons is from. So electron microscope means electronic beams चाहिए उसमें, and which is obtained by heating tungsten filament, which will generate the electrons. So my answer will be tungsten metal. Next, Griffith 1928 reported the phenomena of transformation first in option A H. influenza, option B Bacillus species, option C pneumococci, option D E. coli. So Griffith ने क्या phenomena first रिपोर्ट किया था? तो कौन से बैक्टीरिया के साथ किया था? एक्चुअली इट्स न्यूमोकॉकाई, ऑप्शन नंबर सी. तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसे अपने एक्सपेरिमेंट में माइस को यूज किया था. ओके, सो उन्होंने क्या किया कि एक इनोक्यूलेशन लिया और ऑफ माइस विच विथ वाज वेरियस strains of pneumococci. उन्होंने क्या किया? दे हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया एक लिविंग नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया में इनटू विरुलेंट बैक्टीरिया.
Miss Griffith concluded that heat-killed virulent bacteria transformed living non-virulent bacteria into virulent bacteria. Okay, सो उनके एक्सपेरिमेंट में ऑल्दो वो फेल कर गए एक्सपेरिमेंट में फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक मटेरियल के इंफॉर्मेशन के लिए, बट ये एक टर्निंग पॉइंट था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. सो उन्होंने जो बैक्टीरिया को यूज किया था दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोक्की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. The resolution power of the compound microscope is 0.2 micron, 0.2 millimeter, 0.2 angstrom units, 0.2 centuries. So a compound microscope, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.2 माइक्रोन. तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंसेज होते हैं. वन टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ अ स्पेसिफाइड. सो एक होता है ऑक्यूलर लेंस में एट द आई पीस, फॉर while the objective lens is found in the ऑब्जेक्टिव लेंस इज फाउंड इन द रिजॉल्विंग नोज पीस. एक होता है आई पीस पे और एक होता है नोज पीस पे. सो जो द रिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है पावर, सो जब ये दो रिजॉल्विंग पावर की जो कैपेसिटी होगी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक पॉइंट में जाकर क्लोज मीट करेगी एंड एट दैट पॉइंट इट विल मैग्नीफाई द स्पेसिमेन. ओके, सो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप it uses two lenses at once to magnify image of a specimen. एक होता है ocular lens में which is in the eyepiece, while one is the objective lens which is at the nose space. Okay, next. The capacity of a given strain of microbial species to produce disease is known as option A, pathogen, option B, virulence, option C, infection, option D, none of these. So the capacity of a given strain of microbial species to produce disease means that is option number B, virulence. Ability होती है, the ability of a microbial agent to cause disease is pathogenicity. अब the degree at which this microorganism or this pathogen will infect, that is virulence. Okay, so the degree of which an microorganism is pathogenic, this is virulence, whereas ability of a microbial agent to cause disease is pathogenicity. Now question number 23. The monoclonal antibodies are associated with the name of option A, Burnett, option D, Medvar, option C, Milstein-Kohler, option D, Owen. So it's option A, Burnett. This is because they are characterized by their ability to help a human body combat viral infections. Okay, better. They can target only one specific type of antigen. So monoclonal antibodies, so they can target only one specific type of antigen. This body responds by producing antibodies to counteract the virus antigens whenever a person falls ill. So इसका एक एग्जाम्पल हमने पैंडेमिक के टाइम में देखा था when the vaccines were introducing, so that is during COVID vaccine. So various monoclonal antibodies were also tried, even few of them were successful. So these are associated with the names of Burnett. Lederberg and Tatum described the phenomena of conjugation, transformation, mutation and plasmid. Okay, so few slides पहले हमने देखा कि transformation was discovered by Frederick Griffith. Okay,
and Ledberg and Tatum, they describe the phenomena of conjugation. ओके, सो उन्होंने इसमें ये बताया था, मीन्स दे हैव डिस्कवर्ड इट टू सी अ सिमिलर वे of that of sexual reproduction seen in more complex organisms. ओके, उन्होंने अपने डिस्कवरी के टाइम कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था? इकोलाई को. ओके, सो इकोलाई को उन्होंने एंटर्ड किया थ्रू अ सेक्सुअल फेज ड्यूरिंग विच it could share its genetic material, means genetic information, and through bacterial conjugation, and this phenomena they termed as conjugation. Okay, so this phenomena was first described by Lederberg and Tatum. Next question, hanging drop method for mortality study was first introduced by option A Robert Koch, option B Louis Pasteur, option C Lister, option D Leeuwenhoek. So ये hanging drop method for mortality study. So ये जो mortality test हुआ था for hanging drop, it's a laboratory technique. So इसको ऑब्जर्व किया गया था बैक्टीरियाज में mortality rate को चेक करने के लिए. So इसमें एक स्लाइड ली गई थी दैट वाज अ कॉन्केव्ड, मींस एक बीच में उसकी कैविटी थी. सो इन दैट द साइड्स ऑफ द स्लाइड्स मतलब जो स्लाइड थी में हमारी, उसके साइड्स में जहाँ पे जो कैविटी है उसके साइड्स में वैसलिन पुट की गई. आफ्टर दैट एक कवर स्लिप में कुछ इनोक्यूलेशन लिया गया और उसे उस कवर स्लिप में पुट किया गया. आफ्टर दैट वो कवर स्लिप में वो कैविटी वाली स्लाइड को ऊपर से पुट किया गया एंड इट वाज इन्वर्टेड. अब जब उसे इन्वर्ट करके उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा, सो दे फाउंड दैट फ्यू बैक्टीरियाज वेर मोर्टाइल, मींस उन लोग कुछ मूवमेंट शो कर रहे हैं. सो वन कैन डिटरमाइन वेदर बैक्टीरिया आर मोर्टाइल और नॉन मोर्टाइल, उनका डायरेक्शन क्या है मोर्टाइल का, या फिर उन लोग किस स्पीड में, उसका क्या स्पीड है उनका मूवमेंट का, इसको चेक करते हैं. सो दिस वाज ऑल स्टडीड थ्रू हैंगिंग ड्रॉप मेथड ऑफ मोर्टेलिटी स्टडी. सो हु इंट्रोड्यूस दिस? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्टर, लिस्टर या ल्यूवेनॉक. सो प्लीज डू कमेंट डाउन द करेक्ट ऑप्शन. एंड वन मोर थिंग, अ क्विक रिकैप. So Lister क्या थे? Lister, he was known as father of antiseptic surgery. Next, Louis Pasteur क्या थे? Louis Pasteur, he is known as the father of microbiology. उनने discover की vaccinations को, pasteurizations को, microbial fermentations को. Edward Jenner कौन थे? Edward Jenner, he discovered the smallpox vaccine. Antony van Leeuwenhoek, he is known as the father of microbiology. Then Beijering क्या थे? He is known as the father of agricultural microbiology. Okay, so this question number 25. Please do comment down the correct answer. और आपकी जो भी queries हो आप उसे भी नीचे comment down कर सकते हैं. हम लोग अपना best देंगे and we will reply you as soon as we'll see. Or thank you for your time being. So please do subscribe our channel. आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है एज फूड टेक ऑनलाइन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. डेली अपडेट्स रही मिलती है वहां पे. इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट न्यू नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले. उसके बाद आप प्ले स्टोर में हमारा ऐप दैट इज फूड टेक ऑनलाइन, उसे साइन इन करके अपनी प्रिपरेशंस को एनहांस कर सकते हैं. हमारा लिंक्डइन चैनल है फूड टेक ऑनलाइन से, यू कैन फॉलो दैट. वी हैव इवन अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ फूड टेक ऑनलाइन, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप टू. सो ऑल दी सोशल मीडिया का लिंक या सभी को ये सारी